क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये लेसन नंबर 3 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होता है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 21? A married couple does not have children even after the necessary test. So what are the solutions you would suggest? तो इसका आंसर पेज नंबर 32 में है। Many couples cannot have children due to various reasons. उसके बाद यहाँ से लिखना है but now with the help of advanced medical techniques like IVF, surrogacy, sperm bank, the childless couple can have a child. उसके बाद IVF का पूरा पैरा लिखना है, सरोगेसी का भी पूरा पैरा लिखना है और स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक इसका भी पूरा पैरा लिखना है। यानी ये फर्स्ट सेंटेंस यहाँ से लिखना है और फिर यहाँ से लेके बट नाउ विद द हेल्प ऑफ एडवांस से लेके टिल द एंड ऑफ द पेज तक पूरा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ? Which precautions should one follow to maintain reproductive health? तो ये पेज नंबर 33 में दिया हुआ है। यहाँ से occurrence of menstrual cycle is related with reproductive and overall health of women. Nowadays, women are working at par with men. Due to this, they have to stay outdoors for whole day. Bleeding occurs during menstrual cycle. Due to this, private organ genitals need to be maintained cleaned time to time, otherwise problems regarding reproductive health may arise. Some problems regarding reproductive health may arise in men too. It is essential to maintain the cleanliness of their genitals. Now last में लिखना है also it is important to maintain good reproductive health to be safe from sexually transmitted diseases. 23rd क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये डायग्राम दिया हुआ है, इसे ऑब्जर्व करके मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन करना है। अभी ये डायग्राम जो है वो पेज नंबर 24 में दिया हुआ है। दिस इज़ अ डायग्राम विच इज़ गिवन ओवर देयर। तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज़? रीजनरेशन। The wall lizard breaks up and discards some part of its tail in emergency. Discarded part is regenerated after a period. This is an example of limited regeneration. However, under certain situations, an animal, planaria, breaks up its body into two parts and thereafter each part regenerates remaining part of the body and thus two new planaria are formed. This is called as regeneration. Question number 24, a piece of wet bread or bhakri kept in a humid place for 2 to 3 days. Then फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट विल यू ऑब्जर्व? तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 25 में है। इफ़ अ पीस ऑफ वेट ब्रेड और भाकरी आर केप्ट इन ह्यूमिड प्लेस, फंगस विल ग्रो ऑन इट विद इन 2 to 3 days. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है? सेकेंड वन, दैट इज बी, state the scientific name of the living organism and write its characteristic. The scientific name of the living organism which grows on wet bread or bhakri is what? Mucor and rhizopus. तो आंसर कैसे लिखेंगे? The scientific name of the living organism are mucor and rhizopus. Now we have to write its characteristic. वो पेज नंबर 25 में दिया। characteristics यहाँ से लिखना है। fungi like mucor have filamentous body, they have sporangia. Once the spores are formed, sporangia burst and spores are released. Spores germinate in moist and warm place and new fungal colony is formed. क्वेश्चन नंबर 25, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये पिक्चर ऑब्जर्व करके जो क्वेश्चंस दिया है उसे आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? स्टेट द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है? यू कैन सी द डायग्राम इज गिवन ओवर हियर। What type of reproduction it is? Vegetative propagation. So what you'll write the answer? The type of reproduction shown is vegetative propagation. Second one, identify the part of reproduction. Sweet potato, bryophyllum or potato में what part takes part in reproduction? So the answer is given in page number 25. First one is what? Sweet potato. Sweet potato का आंसर यहाँ से लिखो। Vegetative propagation in sweet potato occurs by buds present on roots. Next one is what? Bryophyllum. Bryophyllum का यहाँ पे है vegetative propagation. First write down vegetative propagation in bryophyllum is performed with the help of buds present on leaf margin. Next one is what? Potato. Potato का आंसर क्या लिखेगा? Vegetative propagation in potatoes is performed with the help of eyes present on tuber. 26th question, observe the diagram and answer the following questions. अभी यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है
और क्वेश्चन नंबर 1A क्या पूछा है, लेबल द इंडिकेटेड पार्ट्स 1, 2 एंड 3 इन द डायग्राम। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 जो है वो पार्ट्स बताना है, तो एग्ज़ाम के टाइम में डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन राइट ओवर हियर फर्स्ट पार्ट इज़ व्हाट, ओविडक्ट, सेकेंड पार्ट इज़ व्हाट, दैट इज़ दिस वन, दैट इज़ ओवरी, और यहाँ पे 3 लिखा है, दैट इज़ दिस वन, थर्ड पार्ट क्या है, यूट्रस। तो नंबरिंग बराबर करके आंसर भी बराबर लिखना है, गलत नंबरिंग करेंगे तो रॉन्ग मिलेगा। तो फर्स्ट वन क्या है, ओविडक्ट, सेकेंड वन क्या है, दैट इज़ ओवरी, थर्ड वन क्या है, यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम ऑकर्स। तो आंसर क्या है, द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम ऑकर्स in oviduct. Next C, where does the embryo gets implanted after fertilization. तो आंसर है after fertilization the embryo gets implanted in uterus. 27th क्वेश्चन, ए में क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये डायग्राम दिया है और ये डायग्राम देख के कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो पहचानना है। तो ये पेज नंबर 24 में ये डायग्राम दिया हुआ है, ये कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, मल्टीपल फिशन। तो आंसर क्या लिखेंगे, The type of reproduction indicated in the following diagram is multiple fission. Second B वाला क्वेश्चन में क्या पूछा है, redraw the given type of reproduction in the correct sequence and explain it. तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है वो करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है, करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, तो इसे वापस ड्रॉ करना है, लेकिन करेक्ट ऑर्डर या करेक्ट सीक्वेंस में ड्रॉ करना है और उसे एक्सप्लेन भी करना है। तो फर्स्ट कौन सा आएगा डायग्राम, दिस वन, सेकेंड ये, थर्ड वाला ये और फोर्थ वाला ये आएगा। तो करेक्ट ऑर्डर यू कैन सी ओवर हियर, फर्स्ट इज दिस, सेकंड दिस, थर्ड इज दिस एंड लास्ट वन इज दिस। और एक्सप्लेन भी करने बोला है, दे हैव सेड एक्सप्लेन इट ऑल्सो, और इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो पेज नंबर 23 में दिया हुआ है। तो आंसर क्या है, amoeba stops the formation of pseudopodia and thereby movements whenever there is lack of food or any other type of adverse condition. It becomes rounded and forms protective covering around plasma membrane. Such encysted amoeba or any other protist is called as what, cyst. Many nuclei are formed by repeated nuclear division in this cyst. It is followed by cytoplasmic division and thus many amoebae are formed. They remain encysted till there are adverse condition. Cyst breaks open on arrival of favorable condition and many amoebae are released. क्वेश्चन नंबर 28, कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द गिवन वर्ड्स। ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है ग्रोथ से लेके इम्प्लांटेशन और सम वर्ड्स आर गिवन इन द ब्रैकेट, यहाँ से सिलेक्ट करना है वर्ड्स को और ब्लैंक्स को फिल करना है। अभी ये जो पैराग्राफ है वो लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, ये सेम पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 28 में भी दिया हुआ है। तो कहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होता है, ग्रोथ से लेके इम्प्लांटेशन, और ब्रैकेट के अंदर से जो वर्ड्स दिया हुआ है उसमें से सिलेक्ट करके ब्लैंक्स को फिल करना है। सो ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट इन द ओवरी ऑकर्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फर्स्ट ब्लैंक में ये आएगा, दिस फॉलिकल सिक्रीट्स एस्ट्रोजन, इसके बाद फुल स्टॉप है, उसके बाद डैश ग्रोस और रीजनरेट्स अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे क्या आएगा, डैश ग्रोस, दैट इज एंडोमेट्राइन ऑफ यूट्रस, ये सेकेंड वन है। यहाँ पे फुल स्टॉप है तो ई कैपिटल लिखना है, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस ग्रोस रीजनरेट्स अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, अंडर द इफेक्ट ऑफ डैश फुली ग्रोन अप फॉलिकल बर्स्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, थर्ड वन इज दिस, luteinizing hormone. So under the effect of luteinizing hormones, fully grown up follicles burst, ovulation occurs and dash is formed from the remaining part of the follicle. तो यहाँ पे क्या आएगा, corpus luteum is formed. Corpus luteum is formed from the remaining part of the follicle. It secretes dash and dash. So what does it secretes? Fifth one, progesterone and estrogen. तो यहाँ पे क्या आएगा, इट सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज हार्मोन्स ग्लैंड्स ऑफ डैश आर एक्टिवेटेड एंड बिकम्स रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे आएगा सिर्फ एंडोमेट्रॉय, ये दिया नहीं है ब्रैकेट में, सिर्फ यही लिखना है, एंडोमेट्रियम। So under the effect of hormones, glands of endometrium are activated and it becomes ready for implantation.
अभी पैराग्राफ के बाद दो क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 31 में दिया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगो सम चेंजेस एट प्यूबर्टी एंड दोज चेंजेस रिपीट एट द इंटरवल ऑफ एवरी 28 to 30 days. These repetitive changes are called as menstrual cycle. Next question क्या दिया है, state the names of 4 hormones which control the menstrual cycle. ये भी पेज नंबर 31 में दिया है। The 4 hormones are follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen and progesterone. Question number 29. If newborns are produced at the age of menopause, they may be with some abnormalities. Why? इसका जो आंसर है पेज नंबर 30 में दिया है। Oocytes released from ovaries during last few months nearing the age of menopause are 40 to 50 years old. Their ability of division has been diminished till now. Due to this, they cannot complete meiotic division properly. If such oocytes are fertilized, the newborns produced from them may be with some abnormalities like Down syndrome. क्वेश्चन नंबर 30, कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे एक टेबल दिया है। फर्स्ट कॉलम में क्या दिया है, सेक्स नहीं तो जेंडर, दैट इज़ या तो मेल नहीं तो फीमेल नहीं तो मेल, और रीज़न फॉर इनफर्टिलिटी दूसरा कॉलम में दिया है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनफर्टिलिटी, कोई कोई कपल्स को चिल्ड्रन नहीं होता है, तो व्हाट इज़ अ रीज़न, तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो फीमेल में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो व्हाट आर दोज प्रॉब्लम यू हैव टू राइट डाउन, नहीं तो मेल में कुछ प्रॉब्लम रहेगा एंड यू हैव टू राइट डाउन दोज प्रॉब्लम ओवर हियर। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन फीमेल और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन मेल जिसके वजह से कपल्स को चिल्ड्रन नहीं होता है, दैट वी हैव टू राइट डाउन। तो फर्स्ट वन दे हैव रिटन ओवर हियर फीमेल, तो फीमेल में क्या प्रॉब्लम होगा जिसके वजह से इनफर्टिलिटी, रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी और द कपल्स कैन नॉट हैव चिल्ड्रन। तो उसका जो आंसर है वो पेज नंबर 32 में दिया हुआ है। तो इन केस ऑफ वुमेन में क्या आएगा, इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफिकल्टीज इन oocyte प्रोडक्शन, ऑब्स्टिकल्स इन द ओविडक्ट, डिफिकल्टीज इन इम्प्लांटेशन इन यूट्रस। तो ये सब पॉइंट्स इस बॉक्स के अंदर लिखना है। अभी मेल में क्या प्रॉब्लम होगा जिसके वजह से इनफर्टिलिटी होता है, तो मेल का प्रॉब्लम भी वही पेज नंबर 32 में दिया हुआ है। एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स इन द सीमेन, स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स, एनॉमलीज इन द स्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये लेसन नंबर 3 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होता है। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम्स। फर्स्ट वन किसका है, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। ये पेज नंबर 27 में दिया है, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। तो ये डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ। क्वेश्चन बी में किसका डायग्राम ड्रॉ करना है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये पेज नंबर 28 में दिया, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। सी विच डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ, स्पोर फॉर्मेशन। ये पेज नंबर 25 में दिया है, दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ, नॉट दिस वन, ओनली दिस मच यू हैव टू ड्रॉ। डी विच डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पेज नंबर 29 में दिया हुआ है, दिस इज ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज इट डिटरमाइन वेदर इट विल बी अ बॉय और अ गर्ल। ये पेज नंबर 31 में दिया, ये येलो बॉक्स में। The man is totally responsible whether the couple will have a boy or a girl child. During zygote formation, man contributes either X or Y chromosomes to the next generation, but woman contributes only X sex chromosome to the next generation. At the time of fertilization, if X chromosomes come from male, the child will be a girl, and if Y chromosome comes then the child will be a boy. Question number 8, write the answers to the following questions by observing the figure below. तो फिगर दिया हुआ है, ये फिगर ऑब्जर्व करके जो नीचे क्वेश्चंस दिया यू हैव टू आंसर देम। और फिगर से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, सिर्फ ये पता चलता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का फिगर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ रिलेटेड टू दिस फिगर, व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट डज द फिगर अबव शो। तो ये फिगर अबव शोज व्हाट, द आंसर इज द फिगर अबव शोज menstrual cycle in females. Question number 10, which organs are involved in this process? The answer है in this process uterus and ovaries are involved. Next question number 11, which hormones are involved in this process? The answer है follicle stimulating hormones.
Luteinizing hormone, estrogen and progesterone are involved in this process. You can see from here also the answer is given here. The four hormones are follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen and progesterone. Next one, question number 12. After how many days do these changes happen again? तो answer है these changes happen again after an interval of 28 to 30 days. That is also given over here. These changes, नहीं तो those changes repeat at an interval of every 28 to 30 days. 13th question. Explain your opinion about the statement that a woman's body is impure while the above process is going on. इसका आंसर क्या है? First point रहेगा during menstruation woman's body is not impure. Menstrual flow is similar to the blood flowing through human's veins. Second point, menstrual cycle is a natural process. Tissues of degenerating endometrium and unfertilized ovum are discarded out through vagina, which is accompanied with continuous bleeding for 5 days. Third point, hence the myth that menstruation makes women impure is absolutely wrong. 14th question, explain the sexual reproductive process in plants with a diagram. तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो पेज नंबर 26, 27 और 28 में है. 26 में ये पॉइंट्स लिखना है. फ्लावर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. उसके बाद ये लिखना है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड एसेंशियल वर्ड्स बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन. उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 27 से लिखना है एंड्रोशियम इज मेल वर्ल एंड इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड एज स्टेमेंस. Gynoecium is female whorl and its members are called as carpels. उसके बाद लिखना है ये pollen grains from anther are transferred to the stigma. This is called as pollination. After this you write from here stigma becomes sticky during pollination. Pollens germinate when they fall upon sticky stigma. That is a long pollen tube and two male gametes are formed. The pollen tube carries the male gametes. Pollen tube reaches the embryo sac via style. Tip of the pollen tube burst and two male gametes are released in the embryo sac. One male gamete unites with the egg cell to form zygote. This is fertilization. Second male gamete unites with the two polar nuclei and endosperm is formed. As two male nuclei participate in this process, it is called as double fertilization. उसके बाद next page का points लिखना है, that is page number 28. First you will write down this. Zygote develops by the food stored in endosperm of seed and thus a new plantlet is formed. This is called as seed germination. Ovule, उसके बाद ये point लिखना है. Ovule develops into seed and ovary into fruit after fertilization. Seeds fall upon the ground when the fruit breaks up and they germinate in the soil under the favorable condition. और डायग्राम भी ड्रॉ करने बोला. डायग्राम पेज नंबर 27 में दिया हुआ है. This diagram you have to draw. Question number 15. Observe the figure below. Write the function of the label part. तो ये फिगर में जो भी पार्ट्स लेबल किया है उस सब का फंक्शन लिखना है. तो हर एक का फंक्शन लिखते हैं. फर्स्ट वन विल राइट डाउन अबाउट गाइनोशियम. Gynoecium is an essential whorl and its members are called as carpel. It consists of stigma, style and ovary. Gynoecium is female whorl of flower which produces female gamete. Next androecium के बारे में लिखते हैं. It is an essential whorl. Androecium is male whorl and its members are called as stamens. It consists of anther and filament. It produces male gamete. Next calyx and corolla. Calyx and corolla are accessory whorls. They are responsible for protection of inner whorls. Next pedicle. Pedicle is a small stalk which supports the flower. Question number 16. Read the following paragraph and write the answers to the questions based on it. ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे रीड करना है और नीचे जो क्वेश्चंस दिया है वो क्वेश्चंस को समझ के you have to find out the answers from here. The first question है how do living organisms maintain their own species continuity? The answer है the living organisms maintain their own species continuity by reproduction. Next one, what are the methods of asexual reproduction in animals? The answer है the methods of asexual reproduction in animals are, it is given in the passage, budding, binary fission and parthenogenesis. Next, why is it said that regeneration is not the real method of reproduction? तो उसका आंसर यहाँ पे दिया है. Regeneration is a process of healing wounds, creating new organs
दिस एबिलिटी हैज़ कम्प्लीटली डिसअपियर्ड इन द डेवलप्ड एनिमल। उसके बाद लिखना है हैंस रीजनरेशन इज़ नॉट द रियल, यहाँ से लिखना है हैंस regeneration is not the real method of reproduction. Next question D, what are the different methods of reproduction in plants? The answer है the different methods of reproduction in plants are vegetative propagation, fragmentation, budding, spore formation, etc. Last question F, what modern breeding methods are being researched in developed animals? The answer है the modern breeding methods being R नहीं लिखना है, the modern breeding methods being researched in developed animals is cloning. Here it is given is cloning. Question number 17, surrogacy, in vitro fertilization, sperm bank or semen bank etc. Modern technology will be useful to humans, support this statement. तो ये statement जो है, ये सब जो टेक्निक है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये ह्यूमन को कैसे यूज़फुल रहेगा ये एक्सप्लेन करना है. तो इसका एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 32 में दिया है. Many couples cannot have children due to various reasons, but now with the help of advanced medical techniques like IVF, surrogacy, sperm bank, the childless couples can have a child. और इसके बाद में सब तीनों का एक्सप्लेनेशन लिखना है, यानी ये पूरा पैराग्राफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का पूरा पैराग्राफ, सरोगेसी का पूरा पैराग्राफ और स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक इसका भी पूरा पैराग्राफ, यहाँ तक पूरा लिखना है. आई रिपीट वंस मोर, ये दो स्टेटमेंट लिखने के बाद many couples cannot have children due to various reasons और ये but now with the help of advanced medical techniques like IVF, surrogacy, sperm bank, the childless couple can have a child. इसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से लेके बैंक तक इन द स्पर्म बैंक तक पूरा का पूरा लिखना है. क्वेश्चन नंबर 18, राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस बाय ऑब्जर्विंग द फिगर. ये फिगर ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया है A, B, C, D, ये क्वेश्चंस का आंसर लिखना है बाय लुकिंग एट दिस फिगर. अभी क्वेश्चन A क्या है, व्हाट डज द अबव फिगर शोज. सो व्हाट डज दिस फिगर शोज, इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 28. पेज नंबर 28 यही फिगर ड्रॉ किया हुआ है. तो व्हाट डज दिस फिगर शोज, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन. तो आंसर क्या लिखना है, द अबव फिगर शोज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन. नेक्स्ट क्वेश्चन B, राइट द नेम्स ऑफ पार्ट्स A, B, C, D. तो ये A, B, C और D ये कौन सा पार्ट है ये बताना है, you have to name it. तो what is part A? Part A, if you look at this figure, what it is, seminal vesicle. उसी तरह part B क्या है, part B is what, prostate gland. Next part C is what, this is part C. तो part C क्या है, urinogenital duct. और पार्ट डी क्या है, पार्ट डी इज़ व्हाट, टेस्टिस. सो यू कैन राइट इट डाउन दिस वे, इस तरह लिखना रहता है. डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू राइट इट दिस वे. व्हाट इज़ ए, ए इज़ व्हाट, सेमिनल वेसिकल. बी क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स. और सी क्या है, यूरिनोजेनिटल डक्ट. और डी क्या है, टेस्टिस. नाउ क्वेश्चन सी क्या पूछा है, राइट द फंक्शन ऑफ द पार्ट डी. तो पार्ट डी क्या था, टेस्टिस. तो इसका फंक्शन लिखना है. तो उसका आंसर है पार्ट डी इज टेस्टिस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन डी, डी इज़ व्हाट, हाउ इज सीमेन फॉर्म्ड. तो उसका आंसर है सीमेन इज फॉर्म्ड ऑफ स्पर्म्स एंड सिक्रीशंस ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड्स. क्वेश्चन 19, उसमें क्वेश्चन ए क्या पूछा, व्हाट प्रोसेस डज द नेक्स्ट फिगर शो. तो आंसर क्या है, द प्रोसेस इन द नेक्स्ट फिगर शोज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. यू कैन सी इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 32. यही फिगर ड्रॉ किया है. तो व्हाट इज़ दिस प्रोसेस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. और ब्रैकेट में यू कैन राइट डाउन फर्टिलाइजेशन इन अ टेस्ट ट्यूब. तो आंसर क्या है, द प्रोसेस इन द नेक्स्ट फिगर शोज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. और ब्रैकेट में क्या लिखना है, फर्टिलाइजेशन इन अ टेस्ट ट्यूब. नेक्स्ट वन क्वेश्चन बी, डिस्क्राइब इन शॉर्ट दैट प्रोसेस. तो इसका आंसर भी पेज नंबर 32 में दिया है, यहाँ पे है. इन दिस टेक्निक, दिस में क्या लिखना है, IVF. सो आंसर क्या रहेगा, इन IVF टेक्निक fertilization is brought about in the test tube and the embryo formed is implanted in uterus of woman at appropriate time. Next one question C क्या पूछा है, who can benefit from this process. तो आंसर क्या है, वो भी पेज नंबर 32 में है.
IVF technique is used for having the child in case of those childless couples who have problems like less sperm count, obstacles in oviduct, etc.